Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Muhammad Ali Khalid. I'm a graduate of Rawalpindi Medical College and currently I'm working as a postgraduate resident in the Department of Ophthalmology of Benazir Bhutto Hospital, Rawalpindi. I welcome you all to this free webinar session organized by MedExam expert and StudyMate for FCPS Part 1 candidates of ophthalmology on the topic of chambers of the eyeball. अच्छा जी, तो टॉपिक को ऑफिशियली स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि FCPS पार्ट 1 ऑफ्थल्मोलॉजी जो है वो बेसिकली किस तरह का एग्जाम है और इसके क्या मेजर कंपोनेंट्स होते हैं. जस्ट अ ब्रीफ डिस्कशन. सो FCPS पार्ट 1 ऑफ्थल्मोलॉजी के बेसिकली दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 जो होता है उसके अंदर भी 100 MCQs होते हैं और पेपर 2 के अंदर भी 100 MCQs होते हैं. पेपर 1 के अंदर वी हैव ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स जो कि हमने पढ़ने होते हैं, जिसमें एनाटमी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी सब चीज़ें आ जाती हैं, जो बेसिकली हमारी जनरल टॉपिक्स हैं जो मेडिसिन सर्जरी के अंदर भी टेस्ट किए जाते हैं. Whereas paper 2 is the paper that is mainly concerned with the questions regarding ophthalmology. अब जो पेपर 2 होता है ऑफ्थल्मोलॉजी वाला, जिसमें ऑफ्थल्मोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर CPSP डज नॉट स्पेसिफाई कि कितने परसेंटेज MCQs जो होंगे वो ऑफ्थल्मोलॉजी रिलेटेड होंगे और कितने MCQs जो हैं वो जनरल सब्जेक्ट से होंगे. ऐसे भी पास्ट पेपर्स आए हैं जिसके अंदर पेपर 2 के अंदर 40 to 50 क्वेश्चंस दे वर फ्रॉम द ऑफ्थल्मोलॉजी सेक्शन और बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस वो सारे जनरल टॉपिक्स में से थे जो कि पेपर 1 के थे. And there have also been past papers in which almost around 70 to 80 questions were from the ophthalmology section and only 10 to 20 questions were from the general subjects जो कि पेपर 1 में पूछे जाते हैं. तो आप कुछ स्पेसिफिकली आपको ये बताया नहीं जाता, ना ही हमारे पास कोई ये इसकी फिक्स प्रोपोर्शन मौजूद है, इसलिए हमें दोनों चीज़ों को, दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होता है. जो पेपर 2 का ऑफ्थल्मोलॉजी सेक्शन होता है ना, उसके जो क्वेश्चंस हैं they're basically asked from 5 major topics: ocular pharmacology, ocular pathology, ocular embryology, ocular anatomy, and the fifth one is ocular pathology. इसमें से जो सबसे मेजर चंक है वो ocular anatomy का होता है, क्योंकि FCPS Part 1 की जो ocular anatomy है that is a bit different and a bit more detailed as compared to the one that we have studied in back and forth here. तो इसकी एनाटमी थोड़ी सी मजीद डिटेल में होती है, थोड़ी सी और फाइन होती है और हमें इसके लिए एक डिफरेंट बुक स्टडी करनी पड़ती है, दैट इज स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटमी. सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली. इसके अंदर हम एनाटमी को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम फिजियोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे एंड विल ऑफिशियली बिगिन. So we are going to discuss regarding the chambers of the eyeball. थोड़ा सा लैग आता है अक्सर औकात मूव करते हुए, तो काइंडली if anyone can confirm that you can see the slides moving. इस वक्त मेरे पास यहाँ पे स्टक आ रही है, ये नॉर्मली सबसाइड कर जाती है एक आधे मिनट में. कि थोड़ा सा लैग आ रहा है अभी. Yes, I can see the slides are not moving. मेरे पास भी यहाँ पे मूव नहीं कर रही. मैं just a minute. अभी तक ये थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है आई गेस. ओके, आई थिंक नाउ इट्स डन. अब आपको स्लाइड्स मूव करती हुई नजर आ रही है? कैन यू सी द नेक्स्ट स्लाइड?
ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द चेंबर्स ऑफ द आई बॉल, इसमें हम आई बॉल को दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले वी हैव द एंटीरियर सेगमेंट एंड देन वी हैव द पोस्टीरियर सेगमेंट। Anterior segment is further divided into the anterior chamber and the posterior chamber. Anterior chamber जो होता है ये कॉर्निया और आइरिस के दरमियान पाया जाता है. This region over here is the anterior chamber and this region over here between the iris, lens and the zonules, this is the posterior chamber. ठीक हो गया. और इस लेंस के पीछे ये जो पूरे का पूरा एस्पेक्ट है, दिस इज द पोस्टीरियर सेगमेंट. ओके, तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे एंटीरियर चेंबर को. The anterior chamber is a small cavity lying behind the cornea and in front of the iris, as I told you earlier, this region over here. It is filled with aqueous humor and the volume of the anterior chamber is 0.2 ml. This is very important. Part 1 के अंदर हमारे पास इस तरह के statistical questions आते हैं, तो you have to remember these values जो कि मैंने इस slide के अंदर डाली हुई हैं. The volume of the anterior chamber is 0.2 ml and it measures 3 millimeters antero-posteriorly. The peripheral margin is known as the angle of the anterior chamber. This region over here is the angle of the anterior chamber. So quite simple. Talking about this angle of the anterior chamber, इसमें हमें सारे structures पता होने चाहिए कि कौन से structures होते हैं इस angle के अंदर और उनकी proper orientation का भी अंदाजा होना चाहिए. So from below upwards, you have to memorize this diagram. इस diagram को आप जितना ज़्यादा देखेंगे, जितना ज़्यादा अपनी विजुअल मेमोरी बनाने की कोशिश करेंगे, उतनी चीज़ें आसान हो जाएंगी. दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम और बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर हो जाती होती हैं. सो in the angle of the anterior chamber from below upwards, first of all we have this root of the iris, this root over here, this is the iris, this is its root. Then we have the part of the ciliary body, this region over here, excuse me. Then we have this line over here which is known as the scleral spur, as I've identified over here. This region is the scleral spur. Then the trabecular meshwork, this complete region over here, and then finally this line over here. This line is known as the Schwalbe's line. और जैसा कि हमने कॉर्निया के लेक्चर में देखा था, जो Schwalbe's line होती है, this is basically the area or the region where the Descemet's membrane terminates. Descemet's membrane is the fifth layer of the cornea. जहां पर ये membrane terminate करती है, वहां पर एक line generate होती है कॉर्निया के अंदर. This is known as the Schwalbe's line. So starting from below upwards, the root of the iris, the ciliary body, scleral spur, trabecular meshwork, and finally the Schwalbe's line. Then coming to the posterior chamber. Posterior chamber lies between the iris and the lens, this small region over here. The volume of the posterior chamber is 0.6 ml. It contains aqueous humor, जिस तरह से anterior chamber में था. And it communicates to the pupil with the anterior chamber. ये जो point है, pupil से communicate करता है with the anterior chamber, as you can see in this diagram. So talking about the aqueous humor, इसकी भी थोड़ी सी details हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए. The aqueous humor is a clear fluid that fills the anterior and the posterior chamber. Volume of the aqueous humor is 0.2 ml, very important. The aqueous humor is formed by the ciliary processes of the ciliary body in the posterior chamber. Both pigmented and non-pigmented layers of the ciliary epithelium make aqueous humor. This is very important and ये पूछा भी जा चुका है पहले. इस डायग्राम को देखें. यहाँ पर we have the ciliary processes which lie in the posterior chamber. In ciliary processes के ऊपर we have an epithelium जिसमें pigmented epithelium भी होती है और non-pigmented epithelium भी होती है. Basically this is a bilayered structure. So this pigmented and non-pigmented epithelium, both of these epithelia are responsible for the production of the aqueous humor. You should remember this क्योंकि previously it was thought कि सिर्फ और सिर्फ non-pigmented epithelium produce करती है, लेकिन now it is confirmed that both pigmented and non-pigmented layers produce the aqueous humor. The mechanism involved in the production of aqueous is active secretion plus ultrafiltration. ये MCQ आ चुका है पहले और ये MCQ इसी तरह से आता है कि मैकेनिज्म का पूछा जाता है और उसमें डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं
जिनके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस भी होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी अलग से ऑप्शन होता है, और एक्टिव सिक्रीशन भी अलग से ऑप्शन होता है, और एक ऐसा ऑप्शन भी होता है जिसके अंदर वी हैव एक्टिव सिक्रीशन प्लस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. So you have to remember that this option is always a superior option because it is now identified that active secretion and ultrafiltration, both of these processes, they have a role in the production of the aqueous humor. So this is a very high yield point. The rate of formation of aqueous humors is 1 to 2 microliters per minute. The entire volume of aqueous is replaced every 1 to 2 hours. The normal intraocular pressure is 10 to 20 millimeters of mercury, which is being generated by this aqueous humor. इसका एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो कि aqueous humor create कर रहा होता है. So you have to remember this intraocular pressure. The normal range is 10 to 20 millimeters of mercury. The pH of aqueous humor is 7.2, and the refractive index is 1.33, which is the same as the vitreous. This is a very high yield point. You have to remember its refractive index. Now coming to the composition of the aqueous humor. The sodium and potassium concentration is similar to that of the plasma. The glucose concentration in the aqueous is 80% of that of the plasma. इसका मतलब है कि aqueous humor के अंदर glucose concentration कम होती है as compared to the plasma. The lactate concentration is twice than that of the plasma because it is excreted from the lens and the cornea and it eventually gets into the aqueous humor. So the lactate concentration is twice than that of the plasma. A very important point. Then ascorbic acid is 50 times more in aqueous than that in the plasma. It is extremely high in aqueous. और इसकी एक वजह है. इसकी वजह क्या है? The ascorbic acids, it absorbs the UV light and it acts as an antioxidant. So you have to remember कि कितने टाइम ज्यादा है और इसके फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों इतना ज्यादा है. It absorbs the UV light and it acts as an antioxidant. The immunoglobulins that are present in the aqueous humor, they include IgG, IgM, and IgE, and they're normally present in the normal aqueous. Other proteins, they include plasminogen, fibroblast growth factor, TGF-beta, insulin-like growth factors. All these proteins, they are isolated in trace amounts in the aqueous humor. Acha ji. Now this is a very important slide. एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज किस तरह से होता है और इसके कौन से पाथवेज हैं जो कि हमें पता होने चाहिए. सो हमने देख लिया कि एक्वस ह्यूमर यहां से प्रोड्यूस हुआ स्टेरिलिटी प्रोसेसेस से इन द पोस्टीरियर चेंबर. इट वेंट इनटू द पोस्टीरियर चेंबर एंड इवेंचुअली इट गॉट इनटू द एंटीरियर चेंबर थ्रू द प्यूपिल. और यहां पर आने के बाद एक्वस ह्यूमर कहां से ड्रेन करता है. सो देयर आर टू मेन पाथवेज दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज. One is the trabecular pathway and the other is the uveoscleral pathway. 90% of the drainage of the aqueous humors occurs through the trabecular pathway. So, quite obvious, this is the more important one, whereas 10% of the drainage occurs through the uveoscleral pathway. अब हम इन दोनों pathways को इस डायग्राम के साथ स्टडी करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम विजुअली इस pathway को याद कर लें. So talking about the trabecular pathway, aqueous humor यहाँ से travel करता करता यहाँ पर आ गया, which is the angle of the anterior chamber. As you can see, this is the iris, this is the cornea, और यहाँ पर हमने कहा था कि इस जगह पे तो structure है, this is the angle. ठीक हो गया. यहाँ पर we had trabecular meshwork. Aqueous humor यहाँ तक आता है और trabecular meshwork में जाता है और trabecular meshwork से traverse होके it eventually enters this canal over here, which is known as the canal of Schlemm. ठीक हो गया. अब कैनाल ऑफ श्लेम में जाने के बाद इसके फर्दर दो पाथवेज बन जाते हैं. पहले हम एक पाथवे को देखेंगे और फिर उसके बाद हम दूसरा पाथवे देखेंगे. यहां तक तो कॉमन हो गया. ठीक हो गया ना. अब कैनाल ऑफ श्लेम में जाने के बाद क्या होता है कि यहां से aqueous humors enters from the canal of Schlemm into the collecting channel, this structure over here. From here, from the collecting channel, the aqueous humor drains into the deep scleral venous plexus. This plexus over here, ये sclera के अंदर located होता है. Eventually, it goes into the episcleral venous plexus, sclera के superior aspect के अंदर, and from there it drains into the anterior ciliary vein. ठीक हो गया. तो कुछ aqueous humor जो है, which went into the canal of Schlemm, it drained through this pathway into the
anterior ciliary vein. But there is another pathway as well after the aqueous humor enters into the canal of Schlemm. Some of the aqueous humor, it eventually enters into this channel over here, which is known as the aqueous vein. Some collective channels, they bypass the deep plexus and they pass directly through the sclera through the channels called aqueous veins. जो कुछ aqueous humor है वो इस पूरे के पूरे pathway को traverse करता है, इसको negate करता है और वो enter होता है into these aqueous veins which eventually drain directly into the conjunctival veins. ठीक हो गया? तो ये canal of Schlemm में जाने के बाद we have two pathways over here, जो कि collectively they are known as the pathway or the drainage through the trabecular meshwork or the trabecular pathway. ये दोनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि क्योंकि अल्टीमेटली तो आपका एक्वस ह्यूमर ट्रेबेक्युलर मेशवर्क से क्रॉस करता हुआ जा रहा है ना. सो बोथ दीज मैकेनिज्म्स दे आर नोन एज द ड्रेनेज ऑफ द एक्वस ह्यूमर थ्रू द ट्रेबेक्युलर पाथवे. तो एक तो आपने कोशिश करनी है कि इस डायग्राम के थ्रू ही आप इसको याद कर लें कि ट्रेबेक्युलर मेशवर्क तक आया, ट्रेबेक्युलर मेशवर्क में जाने के बाद कैनाल ऑफ श्लेम में आया, यहाँ तक कॉमन है. इधर से दो पाथवेज आ गए. पहला जो पाथवे है उसके अंदर एक्वस ह्यूमर ड्रेन इनटू द कलेक्टिंग चैनल, from there to the deep scleral plexus, from there to the episcleral plexus, eventually into the anterior ciliary vein. और जो दूसरा पाथवे है वो ये है कि यहाँ से कुछ चैनल्स हैं वो completely bypass करते हैं scleral venous plexus को, and यहाँ पे चैनल्स हैं which are known as the aqueous veins. They eventually traverse into the conjunctival veins. So this is the trabecular pathway of the aqueous humor drainage. Now coming to the uveoscleral pathway, which only accounts to about 10% of the total drainage system of the aqueous humor. इसमें क्या होता है? कुछ aqueous humor जब anterior chamber के अंदर आता है तो these arrows over here you can see, ठीक है, यहाँ पर जो ये पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये anterior surface of the ciliary body पर जाते हैं, इस तरफ जाते हैं और ये extra visit करता है between the extracellular spaces between the cells. यहां से एक्स्ट्रा विजिट करके इट एंटर्स द सुप्राकोरॉइडल स्पेस एंड इवेंचुअली इट ड्रेन्स इनटू द वर्टिकोज वेन्स. ठीक है? सो दिस इज द सेकंड पाथवे ऑफ द ड्रेनेज ऑफ द एक्वस ह्यूमर व्हिच इज द यूवियोस्क्लेरल पाथवे. तो ये दोनों पाथवेज आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए. ओके, कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ द aqueous humor. The aqueous humor supplies the metabolic needs of the avascular lens and cornea, and it maintains the intraocular pressure. Areas of resistance of aqueous drainage. सबसे important site जो resistance की होती है, this is the trabecular meshwork. This is the chief site. और जो दूसरी site होती है, this is the where the anterior surface of the lens is in contact with the iris. As you can see over here, यहाँ पे lens है, यहाँ पर iris है. तो जहाँ पर ये contact में रहेगा, वहाँ पर भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस को मिलेगी. लेकिन अगर आपसे चीफ एरिया पूछा जाए या मेजर मेन एरिया पूछा जाए तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ट्रेबेक्युलर मेशवर्क. अब हम थोड़ा सा ट्रेबेक्युलर मेशवर्क की जो एनाटॉमी है उसके बारे में देख लेते हैं. द ट्रेबेक्युलर मेशवर्क सेल्स दे आर लाइन्ड बाय हाइलुरोनिक एसिड ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस, जिसका काम होता है दे रिड्यूस द फ्रिक्शन इन द मूवमेंट ऑफ द एक्वस ह्यूमर. They have well-developed phagocytic properties, enzymes, tissue plasminogen activator, and hyaluronidase. They ingest and degrade solid material and prevent accumulation of the debris. आप इस स्ट्रक्चर को देखें, ये बिल्कुल एक जाली की तरह है. ठीक है, यहाँ से एक्वस ह्यूमर ने पास करना है. इस जाली के अंदर अगर ब्लॉकेड आता जाएगा तो अल्टीमेटली एक्वस ह्यूमर वोंट बी एबल टू पास. बट अगर इसके अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म होगा कि इसमें जितना भी डेब्री है, डर्ट है, कुछ भी कोई ऐसी चीज है जिसने एक्यूमुलेट होना है, वो अगर क्लियर होती जाएगी तो अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट एक्वस ह्यूमर विल नॉट फेस रेजिस्टेंस एंड इट इज गोइंग टू ड्रेन इनटू द कैनाल ऑफ श्लेम. सो it is lined by enzymes which have phagocytic properties. They ingest and degrade the solid material and prevent the accumulation of debris for the normal passage of the aqueous humor. The trabecular meshwork is divided into three main parts. This is a very good diagram. इसमें बिल्कुल clear है. आप यहाँ पर देख सकते हैं. यहाँ पे आपको तीन types के cells नजर आएंगे. Cells in which are colored green, which are colored red, and which are colored blue. इसके जो तीन parts हैं, they are known as the juxtacanalicular part of the trabecular meshwork. Juxtacanalicular का मतलब है just in approximation with the canal of Schlemm. ठीक है? So juxta, just in a position. This region over here, then we have the corneoscleral, this red region over here, and then we have the uveal portion. ठीक है?
अब यहीं पर आप डायग्राम में अगर देखें ना सिर्फ, तो आपको नजर आ रहा है कि जो जेक्स्टा कैनालिक्युलर सेल्स हैं दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, ठीक है। तो अगर ट्रेबेक्युलर मेशवर्क के अंदर पूछा जाए कि कौन सा रीजन सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस देता है एक्वस ह्यूमर की फ्लो को, so this is going to be juxtacanalicular portion of the trabecular meshwork, ठीक है। Then we have this corneoscleral lesion, and then we have this most dilated part of the trabecular meshwork, which is the uveal or the uveoscleral portion. So if you're asked that what is the site which causes least resistance within the trabecular meshwork to the flow of the aqueous humor, then it is going to be the uveoscleral part, ठीक है। इसमें आपको नजर आ रहे हैं कि बहुत फेनेस्ट्रेशंस जो हैं ये बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो यहाँ पे एक्वस ह्यूमर बहुत इजीली ट्रेवर्स करता है, अल्टीमेटली इट एंटर्स इनटू द कैनाल ऑफ श्लेम, ठीक हो गया। So you have to remember this detailed structure of the trabecular meshwork as well. Coming to the variation of intraocular pressure. The normal intraocular pressure, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, the normal range of the intraocular pressure is 10 to 20 millimeters of mercury. Mean is 15 to 16 millimeters of mercury. There is a diurnal variation in the intraocular pressure. It is usually maximum in the morning. ये एक physiological variation है, so you have to remember that the intraocular pressure is usually maximum in the morning. Now coming to sleep and general anesthesia, they both decrease IOP. इसकी क्या वजह है? इसकी सिंपल सी वजह ये है कि स्लीप में और जनरल एनेस्थीसिया के अंदर जो मसल्स की टोन होती है, जो एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल्स की टोन होती है, वो डिक्रीज कर जाती है। जब एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल्स की टोन डिक्रीज करेगी तो वो ग्लोब के ऊपर प्रेशर कम एक्सर्ट करेंगे, एंड इवेंचुअली दैट इज गोइंग टू contribute to the intraocular pressure and will decrease the intraocular pressure. So you have to remember both of these. Then strenuous exercise decreases intraocular pressure. अच्छा, इसका ना मैकेनिज्म कोई बहुत अच्छा पता नहीं है, लेकिन जो कुछ थोड़ी बहुत जॉन फेरिस के अंदर मेंशन हुआ है वो यही मेंशन हुआ है कि because of metabolic acidosis and certain changes in the plasma osmolarity, there has been noted कि ये इसका लिंक बनता है with the decrease in intraocular pressure, though it is not very well understood. But you have to remember this कि strenuous exercise में, aerobic exercise में intraocular pressure थोड़ा सा decrease करता है, ठीक हो गया। Then coming to the Valsalva maneuver, the Valsalva maneuver increases intraocular pressure. अब इसमें आपने ये याद रखना है कि कोई भी ऐसा मैनूवर जो कि सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, चाहे वो वेल्साल्वा मैनूवर हो या कोई भी और ऐसी एक्टिविटी हो जिससे आपका इंट्राथोरैसिक प्रेशर और सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, उससे क्या होगा कि जब सेंट्रल वीनस प्रेशर इंक्रीज करता है ना, तो वो ऑल द वे बैक सारे के सारे वीनस सिस्टम के ऊपर एक प्रेशर इफेक्ट जनरेट करता है। तो हमने क्या कहा था कि जब aqueous humor जब ड्रेन हो रहा था, इट वाज बीइंग ड्रेन इनटू द वेन्स, राइट, एंटीरियर सिलियरी वेन, वर्टिकोस वेन्स। जब उन वेन्स का प्रेशर इंक्रीज करेगा तो देयर इज गोइंग टू बी बैक फ्लो ऑफ द aqueous humor, उसमें aqueous humor जा नहीं पाएगा, and eventually it will cause increase in the intraocular pressure, ठीक हो गया। So this is the logic behind the increase in intraocular pressure during the Valsalva maneuver. Okay, so this was all regarding the chambers of the eyeball और उसकी जो बेसिक्स हमने डायनामिक्स देख ली है। अब हम कुछ पास्ट पेपर एमसीक्यूज देख लेते हैं जो कि पूछे जा चुके हैं इस टॉपिक में से। The normal volume of the aqueous humor is 0.25 to 0.3 ml. हमने 0.2 ml बोला था, लेकिन जो इस एमसीक्यू के अंदर क्लोजेस्ट रेंज थी वो यही थी। So the volume of aqueous humor is 0.25 to 0.3 ml. The refractive index of the aqueous humor is 1.33, which is the same as the vitreous, as I told you. Regarding aqueous humor, it is present both in anterior and the posterior chamber. Quite evident, ये भी देख लिया हमने. The aqueous contains ascorbate more than the plasma, 50 times ज़्यादा है, right? ये मैंने आपको बताया था. The intraocular pressure is maximum in the morning. इसकी variation का भी पता होना चाहिए हमें. And measurable change in the intraocular pressure occurs in the morning. ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो अभी हमने इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हमने स्नेल्स ऑक्यूलर एनाटॉमी से भी और जॉन फेरिस से भी फिजियोलॉजी का पोर्शन भी कवर कर लिया, एंड आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई हों। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन फील फ्री टू आस्क।
I think there's some sort of lag again. Slides change नहीं हो रही. Just a minute. I think yes, it's working now. Okay. So we're offering this course in FCPS Part 1 Ophthalmology. Following specialties are being offered: medicine and allied, surgery and allied, diagnostic radiology, gynecology and obs, ophthalmology, ENT dentistry. Course format includes discussion of basic topics, video lectures that will be available throughout the day. Live sessions, if missed, will be available in video form throughout the day. Mock exam, multiple tests, study guidelines and plans, access to private Facebook study group, in practice of MCQs, and one-on-one access to the mentors. This is the team that we have. सारी डिटेल्स आपकी ये हम वीडियो के नीचे भी शेयर कर देंगे. If you have any question, you can feel free to ask me as well. Thank you very much.